वेलकम बैक टू चैनल दी IIM Guy, माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही अलग है क्योंकि मैं अपने घर से निकल के एक कॉलेज के कैंपस में आ गया हूँ। कहने को तो ये कॉलेज है, लेकिन ये एक शहर जितना बड़ा कैंपस है इसका, 650 एकड़ का कॉलेज है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जलंधर पंजाब में इसका कैंपस है। कैंपस इतना बड़ा है कि मुझे काफ़ी घंटे हो गए यहाँ पे रहे हुए, लेकिन मैं अभी तक कैंपस का 2% भी नहीं देख पाया हूँ। शहर जितना बड़ा कॉलेज है, 150 कोर्सेज है, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली MBA के कोर्स के बारे में बताऊंगा। मैं बात करूंगा MBA के हेड से, मैं बात करूंगा कुछ करंट स्टूडेंट से। मैं आपको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना दिखा सकता हूँ उतना वीडियो में दिखाऊंगा, और आप इस वीडियो को देख के ये डिसाइड कर सकते हो कि भैया ये कॉलेज आपके लिए क्या क्या ऑफर कर सकता है अगर आपको MBA करना है तो जुड़े रहो एंड तक। दोस्तों, मैं आपको जैसा मैंने बताया यहाँ पे तो 150 से ज़्यादा कोर्सेज है, लेकिन मैं MBA के कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ का जो MBA का कोर्स है, जो MBA का डिपार्टमेंट है, उसका नाम LPU के अंदर, उसका एक्चुअल नाम याद रखना, वो है मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कोई बोले मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस क्या है, तो यार वो LPU का MBA डिपार्टमेंट है। तो हमें ये MBA वार्ड में MBA डिपार्टमेंट वॉक करेंगे और मैं बच्चों से आपको रियल पिक्चर बात करके बताऊँगा क्या है यहाँ का। तो अभी हम बैठे हैं LPU के MBA स्टूडेंट्स के साथ। ये कुछ MBA स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं भैया कि एडमिशन कोई लेता है, LPU के बारे में सब जानते हैं, लेकिन एडमिशन कोई कैसे लेता है, क्या सोच के लेता है। तो आप अपना नाम बताएं। My name is Neha. So Neha, who is in the second year in MBA right now in the Mittal School of Business। तो ये बताओ नेहा कि अब तो आपको 1 साल हो गया है, तो आपने कैसे एडमिशन लिया? उस वक्त आप क्या पढ़ाओ था, आप कैसे क्या स्टेज में थे, कैसे आपने कौन सा एग्जाम दिया और क्या सोच के फिर एडमिशन लिया? So after I graduated, I decided very late that I should pursue MBA. So among the options I had, LPU was one of them. So I searched about them on the website and they contacted me. Then they told me that we had to go through a LPU Nest exam, and after that we have to go through an interview process as well. So the LPU Nest exam was under surveillance. I gave it from my home, from my own space. It was online, but it was continuously under surveillance, and we were provided scholarships according to the marks we got. After that, I had to go through an interview process as well, where we were asked questions about like general MBA, why LPU, and all that. So after clearing that interview, we were supposed to report, and an induction was conducted for us. The admission process was really seamless and smooth for me because the team was connected to you through the entire process. So that's it. Very good, very well said. So LPU Nest is the name of the exam. Exam का नाम LPU Nest है, and she's saying कि पूरा टीम कनेक्टेड रहता है, and then she finally gave the interviews and GD and got admission. ये तो हुई, आपने एडमिशन लिया। अब उस वक्त कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे आप सबके। मार्केटिंग में एक टर्म होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि कई बार हम कोई सामान खरीद लेते हैं फिर हमें लगता है गलत खरीद लिया। आपने सबने पढ़ा होगा, तो सच बताओ, मेरा चैनल रियलिटी कवर करता है, क्या LPU में भी ऐसा हुआ? कितना आप 1 साल बाद कितने खुश हो, आप बताओ। नहीं, एक्चुअली जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही मिला। हम सब ने देखा LPU का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, एंड आई गेस अब तक सभी ने देख चुके हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ LPU प्रोवाइड करता है। हम क्लास में जब तक होते हैं तब तक तो पूरी डिलीजेंटली क्लासेस लगाते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, हर एक असाइनमेंट के लिए टीचर से कंसल्ट करते हैं एक्सेट्रा। ये तो हुई पढ़ाई की बात, लेकिन जब हमारे क्लासेस 5 बजे ख़त्म होते हैं या 4 बजे जब भी ख़त्म होते हैं, आप बाहर आके देखोगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अभी देख सकते हैं कि राइट नाउ इंडक्शन चल रहा है, आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्नूकर खेल सकते हैं, बॉलिंग खेल सकते हैं, आपको यहाँ पे ओलंपिक साइज पूल्स मिलते हैं, वहाँ पे आप जाके स्विमिंग कर सकते हैं। और कैंपस तो इतना बड़ा है, आप घूमते घूमते थक जाओगे, एक दिन में कवर नहीं होता। पूरे दिन आप दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जाके टाइम पे पास कर सकते हैं, कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो टाइम यहाँ पे कैसे चला जाता है पता ही नहीं लगता एक्चुअली। बहुत बढ़िया। मैंने शुरू में यही बोला था इनको वीडियो में कि भाई मैं आपको कैंपस दिखा तो रहा हूँ, पर ये 1/10 ऑफ द कैंपस भी नहीं है। इतना बड़ा कैंपस है, 600 एकर्स, मतलब ये आप देख लेना कितना बड़ा कैंपस है। शाम को अगर आपको लगे कि हमें खेलना चाहिए तो यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया प्लेइंग ग्राउंड फैसिलिटीज दिए हुए हैं, आप खेलते खेलते थक जाओगे, आपको प्ले ग्राउंड खत्म नहीं होंगे। देखो दोस्तों, मैं तो रियलिटी बताता हूँ आपको बी स्कूल के बारे में।
IIM हो गया तो ठीक है, लेकिन IIM नहीं हुआ ना तो कहीं MBA करके आप क्या क्या गेम्स होता है अपने स्नूकर और बॉलिंग कहीं नहीं करते हो। तो भैया सबको MBA तो सबको करना है ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि IIM हुआ तो ही MBA करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे। तो इतना अच्छा MBA का एक्सपीरियंस मिलना भी एक बड़ी बात होती है। तो ये आप मानो पॉजिटिव्स इस कॉलेज के। अब हम बात करेंगे सीधा जो डीन है MBA डिपार्टमेंट के, MBA कॉलेज के, मिस्टर राजेश शर्मा। ही इज़ दी डीन ऑफ दी मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस LPU के। तो ही इज़ दी be all and end all for everything execution wise. So we'll ask him, sir, first of all thank you for coming in and talking to us. Could you tell us कि बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए how are they prepared? कंपनीज को लाना तो चलो I'll ask you, बट बच्चों को प्रिपेयर कैसे कराते हैं कि कंपनीज आए तो वो उन्हें सेलेक्ट कर ले, थोड़ा बता सकते हैं? Actually, you see, at Mithil School of Business, the career starts from the day one. Let us think that the students are joining today because we have just started with our pre-term and induction also. So the first day, we have a 6 days program, which is entirely oriented towards the career. So we bring in a lot of industry people, we bring in a lot of trainers, so that the student can get that framework that how and what kind of careers they can make. So in this 6 days, they'll create a roadmap for their career. So it is not final because in management it changes with the context and the environment, but they'll create one draft career roadmap for themselves. And then we have one mentorship class every week with them, where we would work on their strengths and weaknesses. We will help them create their profiles, and they'll do all that in line to that career map which they have planned. And along with that, we have a career planning and placement cell separate, which actually take a lot of classes on soft skills, communication skills, analytical skills, which is the requirement of the corporates. Understood. So you're saying, sir कह रहे हैं कि in the initial 6 days only, and correct me if I'm wrong, you kind of tell the students ki what is your calling in MBA, marketing or finance or HR, and then they can prepare the entire CV and their whole skill set around that. Yeah, so it's a workbook which they have to create. So and teachers and mentors help them create that. Wow. So that can change with the passage of time slightly, because the student might get a different idea when he goes through his courses. But then he creates a framework in the first 6 days itself, and then he entire 2 years he work on that. So sir, does that help also in the summer internships? क्योंकि generally B schools में क्या होता है, मेरे टाइम पे तो हम लोग जब जाते थे तो समर इंटर्नशिप में हम डिसाइड करते थे, और आप कह रहे हो कि दे आर हेल्प्ड टू डिसाइड इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ. तो फिर इंटर्नशिप पे उसका क्या इफेक्ट होता है? डू दे गेट मोर PPO, डू दे परफॉर्म वेल, हाउ, वो थोड़ा बताओ. अब इसके साथ ही पहले मैं एक आपको एक और चीज़ जोड़ दूं कि जैसे ही हम ये मेंटरशिप की क्लासेस शुरू करते हैं और बच्चे का कोर्स प्रोग्राम शुरू हो गया, in MBA our specialization starts in the second semester itself, which is third module, because we have a modular system. We have 8 modules in the MBA program, and one module is of 2 months, right? So the specialization starts in the third module. That means before going in for summer training, he's already studied his specialization courses. Because when the companies come and select students for the internship, they also ask questions related to specialization area. So the students are already prepared for the specialization area. So this has increased our actually the selection rate in the PPOs also. Great, great. Again, so people who are not aware, generally normally in B schools, you select specializations after 1 year. So you do internships. When you go to internships, you are not really fully, prepared for marketing, operations, HR, क्योंकि you've studied all these specializations. पढ़ा तो आपने सारा है, पर आप काम एक ही में करोगे, क्योंकि कोई ऐसा जॉब बहुत कम होता है जिसमें सारा काम करो. तो what sir is saying कि आप मतलब first semester के बाद ही 2 semesters you study your core subject, and then you go to internship, and obviously you will perform well. First semester में we support them that which area is good for them, why should they select it, and how should they work on those areas. And then you'll be surprised, but then in the second semester itself, the specialization area which they choose, all the specialization area they choose are actually in tie-up with an industry. Wow. Okay. Which means that if a person is choosing his financial consulting area, then it is in tie-up with KPMG. If he is picking up digital marketing, it is in tie-up with Digital Marketing Institute Ireland. Okay. If he is choosing business analytics, it is in tie-up with IBM. Okay. So any specialization area which he chooses, it is in tie-up with some company, and the industry people are coming and teaching them. Wow. And along with that, they are getting a certification also from that company. Can you name a few of these companies who help in these? So KPMG, Ernst & Young, and then IBM,
Digital Marketing Institute Ireland, SHRM for HR, and NSC for financial markets. Great. All the मतलब big names, SHRM and KPI, all big names. So every student has to pick one of these areas, and they'll get a certification also. Apart from our own degree, they'll get a certification from these companies, and the company people are coming and teaching. Yeah, of course. This is again a great point. Not to explain much. कि आप सिर्फ फैकल्टी से नहीं पढ़ते, आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं, तो आप ज़्यादा करंट चीज़ों को पढ़ोगे. सो बस एक नंबर अगर आप दे दो कि व्हाट इज द हाईएस्ट प्लेसमेंट लास्ट ईयर, मतलब ताकि इसका एक रिजल्ट लोग अगर जानना चाहें. Shoba Realities is the company which offered 30 lakhs package to our students. Great. Right. And around 30 to 35% students would be in the pay packet of 10 lakhs and above. Great. These are great numbers. Thank you so much, Rajesh sir. If there's one more thing, say one line, one USP about LPU that you'll have to tell to all these audience here, viewers here, तो आप क्या बोलोगे? You see, specifically from Mithil School of Point, the focus is on doing. Okay. Rather than on teaching theory and concepts, we actually make students work on every concept. So which means when the industry comes, they don't find people only theoretical, but then they find them with already hands-on exposure. And I can tell you that because whatever companies are coming here and teaching here, or the faculty members teaching here, we have a lot of emphasis on the softwares also. Okay. So for example, in a lot of MBAs, you would not find that they are teaching programming, but all our students would undergo Python because this is the need of the hour. And all of our students would be doing Python and data visualization using software. So a lot of hands-on exposure is given to the student. So that focus on doing would be the one-liner which I think would set us apart from other business schools. Totally explains. This is nicely summarized as well. Industry visits and everything is doing. Thank you so much, sir. Thank you for this interview. Pleasure. अब हम बात करेंगे इंटर्नशिप्स में एक्चुअली कैसा रहा माहौल, क्या एक्सपीरियंस था लोगों का. सो टेल अस अबाउट व्हाई यू गाइस इंटर्न्ड, क्या एक्सपीरियंस था, बताओ थोड़ा. I did my internship from Aditya Birla Group, that was Hindalco unit, and it is the Asia's largest aluminium producing company. I did in HR, where I learned employees grievance handling and compensation. In compensation, calculating and knowing their provisions for bonus and gratuity. I improved my skills, like that boosted my confidence, and here I am. Which city did you were interning in? कहाँ पे internship? It was in it is in Renukut, Okay. Sonbhadra district. Perfect. Where did you intern at? I interned in Indian Oil Corporation Limited as a human resource intern, HR, as an HR only, under Kanika Shri Bhalla ma'am. She is a manager of employee relation over an experience of 8+ and under the guidance of Mr. Deepak Kapoor, who himself is an introvert and have an experience of around 35 years of experience. Which city did you intern? I interned in Northern Regional Office in Noida. Noida. Yes. So यार tell me this कि जिनको स्टार्टअप करना है, मेरे जैसा कोई है जिन्हें जॉब नहीं करना, how can they benefit from LPU? Sure, definitely. So, I would like to share about this scheme that is provided by LPU, and not only Mithil School of Business, it is throughout university, lovely professional university. We have a university seed grant, which is given and provided to the students who want to follow their entrepreneurial dream and start up their own venture. So basically, if a person, an individual, a student gives their, the project and their dream, and it's properly designed, financially thing, the university approves and gives them financial help. How much of a help? So that really depends upon their financial needing. Understood. So startups के लिए भी आपको पूरा support मिलता है कि आपको पैसे मिलते हैं कि आप startup कर पाओ, इससे अच्छा और क्या चाहिए. Thank you so much. Tell us about the industry help, industry exposure जो अभी हमें डीन साहब बता रहे थे, उसके बारे में बताओ आप लोगों को. So हमें सिर्फ क्लासेस में बिठा के पढ़ाया नहीं जाता. We have case-based learning and we have simulation-based learning. So उसमें हमें इंडस्ट्री जो है उसके एक्सपोजर मिलता है. What the industry is and how we actually deal in the industry. उस केसेस को हम सॉल्व करते हैं so that we have our horizons explored. बढ़िया. Isn't it? So my name is Gandhi, and we also had the privilege to take part in various life projects organized by companies like Guffey Monks, Bicano, Lotus Botanicals. So it is rightfully said that LPU gives us immense opportunities to grow our personal and professional life as well. So yeah, my friend. बढ़िया. I like the same part. यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत फोकस करते हैं. Okay. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे हैं, मेगा मार्केटर्स, SML, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लाइव प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं. ठीक है. इससे बच्चों को कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स पहले से ही मिल जाते हैं. एक्सपोजर मिल जाता है. हाँ, वो बहुत अच्छा है यहाँ पे. बहुत बढ़िया. थैंक यू ऑल फॉर दीज आंसर्स. थैंक यू एवरीवन, आप लोग जिन्होंने इतना बताया LPU के बारे में.
मुझे तो काफ़ी कुछ पता चला है। आपके और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट से बताओ, मैं आंसर करवाऊँगा। काफ़ी बड़ा कैंपस, इतनी सारा सुविधा शायद ही कोई प्राइवेट कॉलेज में मिले। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।